फिर भारती, क्योंकि और कोई है ही नहीं। हाँ जी, दिख नहीं रहा। कनकवल्ली जी। हेलो हेलो हेलो। याज्ञसेनी पर आधारित द्वितीय दिन के प्रथम सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस सत्र का जो शीर्षक है वह है संवाद याज्ञसेनी एंड पावरफुल वीमेन इन इंडियन एपिक्स। तो मैं यहाँ पर इस सत्र में पधारे सभी दर्शकों का, हमारे मुख्य अतिथियों का मैं वाचिक रूप से स्वागत करती हूँ। और मैं अपने सभा में उपस्थित अतिथि, जिनमें प्रोफेसर सुधा रानी पांडेय मैम, प्रोफेसर अर्चना दुबे मैम और इस सत्र की चेयरपर्सन मैम प्रोफेसर चूड़ामणि नंदगोपाल, जो कि एचओडी हैं जैन यूनिवर्सिटी बेंगलोर से। मैं मैम को आमंत्रित करती हूँ कि सभा को सुसज्जित करें आकर के। वेलकम मैम। डॉक्टर प्रोफेसर अर्चना दुबे मैम, जो कि भोपाल परिसर में हिंदी विभाग की प्रोफेसर है, मैम को भी मैं आमंत्रित करती हूँ मंच को सुशोभित करें अपनी उपस्थिति से। डॉक्टर प्रतिज्ञा आर्य मैम जो कि वेदव्यास परिसर से हमारे बीच उपस्थित हैं, मैम को भी मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर प्रतिज्ञा आर्य मैम। आप सभी का स्वागत है। इस सत्र को प्रारंभ करने से पहले मैं मंच पर आसीन सभी अतिथियों से अनुरोध करूंगी कि वह दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। मैम भारती, दीप। मैम प्रीति मैडम। इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न ताक्षयोरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। धन्यवाद मैम। श्री गुरुभ्यो नमः। धर्मस्तेवास्ति सुरक्षितोऽस्मिन् महीतले कर्म शुभम तथैव संसारलता फलन्ति विभाति नारी जगतो अस्ति मूलम। ये बिल्कुल सही है कि नारी इस जगत का मूल है, इसलिए नारी पर आधारित इस
संगोष्ठी के द्वितीय सत्र में मैं आपका वाचिक और औपचारिक रूप से स्वागत और धन्यवाद करती हूँ। हम सभी ने याज्ञसेनी पर आधारित एक लघु मंचन का आस्वादन कल सभी ने देखा, जिसमें द्रौपदी का प्रारंभ से लेकर फायर टू फ्रॉस्ट इस थीम पर आधारित पूरी एक जीवन यात्रा को हमने बहुत संक्षेप में हमने वहाँ पर देख करके उसका आस्वादन किया। आज इसमें याज्ञसेनी का जो चरित्र है वो बेशक संपूर्ण गुण दोषों से परिपूर्ण एक ऐसा किरदार रहा जो जटिल विसंगतियों से पूर्ण आधुनिक युग में भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। याज्ञसेनी में एक आदर्श गृहिणी, पतिव्रतता, दूरदर्शिता, क्षमाशीलता, धैर्यशीलता, स्वाभिमानता आदि सभी गुण पूर्ण रूप से अनुकरणीय हैं। स्वधर्म पालन करने की शिक्षा भी हमें यहाँ पर याज्ञसेनी से साक्षात देखने को मिलती है। आज का इस सत्र का जो हमारा थीम है, जो भी हमारी याज्ञसेनी और जितने भी पावरफुल वुमेन्स हमारे इंडियन एपिक्स में रही हैं, उनको लेकर के एक संवाद सत्र का आयोजन इस सत्र में किया गया है। इस सत्र की चेयरपर्सन के रूप में हमारे साथ विराजमान है प्रोफेसर चूड़ामणि नंदगोपाल मैम, जो कि डीन मानविकी और सामाजिक विज्ञान संकाय जैन यूनिवर्सिटी की एचओडी हैं। मैम एक प्रतिष्ठित कला इतिहासकार, समाज शास्त्रज्ञ और पुरातत्व में पीएचडी प्राप्त किया हुआ है। 4 अंतर्राष्ट्रीय और 2 राष्ट्रीय अनुसंधान फेलोशिप से सम्मानित है मैम। 2003 से 2007 के दौरान IGNCA दक्षिणी क्षेत्रीय केंद्र बेंगलोर के अकादमी प्रमुख के रूप में इन्होंने कार्य किया है। मैम की प्रमुख पुस्तकों के रूप में डांस एंड म्यूजिक इन टेम्पल आर्किटेक्चर, टेम्पल ट्रेजर्स के 3 खंड, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स ऑफ इन सिविलाइजेशन, क्लासिकल डांस, डेरिटोज ऑफ कर्नाटका, द आर्ट ऑफ इमेज मेकिंग, ये पुस्तकें प्रमुख रूप से रही हैं उनके द्वारा संपादित। इनके नाम पर लगभग 70 शोध पत्र जो हैं, 70 से अधिक शोध पत्र इनके द्वारा प्रकाशित हैं। डॉक्टर SR राव फाउंडेशन की संस्थापिका और ट्रस्टी भी मैम रही हैं। चित्रकला परिषद और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में प्रमुख शिक्षाविद के रूप में मैम ने कार्य किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सटेटर UK के साथ कई सहयोगी परियोजनाओं में भी शामिल रही हैं और लगभग 10 अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशनों, 5 कन्नड़ प्रकाशनों की लेखिका मैम रही हैं। मैम मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथ ही इस मंच पर विराजमान है डॉक्टर सुधा रानी पांडे मैम। मैम उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार की प्रथम महिला कुलपति हैं। SN गर्ल्स कॉलेज और MKP कॉलेज के प्रिंसिपल भी मैम रह चुकी हैं। 91 से 99 में HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय की कुलपति भी मैम रही हैं। महिलाओं को समर्पित कई सेमिनारों का आयोजन और शोध पत्रों का प्रकाशन मैम के द्वारा किया जा चुका है। दून रत्न सम्मान, आज़ादी की स्वर्ण जयंती सम्मान, उत्तरांचल रत्न सम्मान, कर्मश्री सम्मान, उत्तरांचल राज्य महिला आयोग द्वारा सम्मानित मैम रह चुकी हैं। साथ ही मैम के मुख्य प्रकाशनों के रूप में मैम का जो प्रकाशन है पत्र लेखन में, वो महिलाओं को आधार बना करके लिखती रही हैं, जिनमें प्रमुख महिलाओं के लिए शिक्षा और समानता, भारत में महिला शिक्षा का भविष्य, महिला और पर्यावरण, लैंगिक समानता, मिथक और वास्तविकता, कालिदास और स्त्री विमर्श इत्यादि महिलाओं पर आधारित मुख्य शोध पत्रों का प्रकाशन मैम के द्वारा किया जा चुका है। मैम मैं आपका भी इस सभा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथ ही हमारे बीच विराजमान हैं भोपाल परिसर के हिंदी विभाग से प्रोफेसर अर्चना दुबे मैम। मैम 2003 से 2005 तक केंद्रीय संस्कृत संस्थान आगरा में व्याख्याता पद पर रही हैं। वर्तमान में भोपाल परिसर के हिंदी विभाग में
प्रोफेसर पद पर कार्यरत हैं। इनको लगभग 19 वर्ष का अनुभव रहा है मैम का। मैम के द्वारा लगभग 60 से अधिक संगोष्ठियों में भाग ग्रहण किया गया। हिंदी साहित्य का सुगम इतिहास, संचायिका भाग 1 और संचायिका भाग 2 का प्रकाशन मैम के द्वारा किया गया। मैम, आपका भी मैं इस सभा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। इसके साथ ही हमारे बीच मंच पर आसीन हैं डॉक्टर प्रतिज्ञा आर्या। मैम की संपूर्ण शिक्षा गुरुकुल कन्या विद्यापीठ उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई है। वर्तमान में केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठ के बलाहार परिसर के शिक्षा शास्त्र विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। भारतीय विदुषियाँ एवं वीरांगनाएं आज मैम इस विषय पर अपना व्याख्यान, अपने विचार हम लोगों के साथ साझा करेंगी। मैम, आपका भी मैं इस मंच पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। सभा में उपस्थित सभी दर्शक के रूप में हमारे प्रिय छात्र छात्राएं और साथ ही हमारे परिसर एवं अन्य परिसरों से पधारे हुए अध्यापकगण, उन सभी का मैं औपचारिक रूप से स्वागत करती हूँ। अभी वेला है मंच पर आसीन सभी अतिथियोंगण के सम्मान हेतु इसमें सर्वप्रथम मैं प्रोफेसर चूड़ामणि नंदगोपाल मैम के स्वागतार्थ डॉक्टर प्रीति शर्मा मैडम को मंच पर आह्वान करूंगी कि वो मैम का सम्मान करें। प्रीति मैम। धन्यवाद प्रीति मैम। इसके साथ ही डॉक्टर कनकवल्ली जी को मैं आमंत्रित करूंगी कि वे प्रोफेसर सुधा रानी पांडे मैम को सम्मान करें। इसके बाद मैं प्रोफेसर अनुपमा मैम से अनुरोध करूंगी कि वो प्रोफेसर अर्चना दुबे मैम का शॉल के द्वारा सम्मान करें। मैम। डॉक्टर प्रतिज्ञा आर्या मैम के सम्मान हेतु मैं पुनः डॉक्टर प्रीति मैम को बुलाना चाहूँगी कि वो प्रतिज्ञा आर्या मैम का सम्मान करें। धन्यवाद मैम। चूँकि ये सत्र बहुत ही विलंब से चल रहा है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और बहुत अधिक विलंब न करते हुए मैं साक्षात आज के चेयरपर्सन प्रोफेसर चूड़ामणि नंदगोपाल मैम, वैसे तो ये हमारी चेयरपर्सन है, इनका वक्तव्य अंत में भी होगा, लेकिन उससे पहले मैम को मैं एक अपने वक्तव्यों को प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करूँगी। मैम प्लीज़। मैम का प्रेजेंटेशन पीपीटी के द्वारा होगा, इसीलिए प्लीज़ उसको ऑन कर दीजिए। सामने से देखेंगे हम लोग। हाँ। आइए। First I speak and then project. Okay. एक्सक्यूज मी, माइक थोड़ा ऊपर करना, ठीक है? नमस्कार।
आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति. I am very happy to be part of this seminar and be with our colleagues today, as I'm not chairing, I'm just being with them. And welcome to all young scholars who are coming up and the faculty of Sanskrit. Unfortunately, I have not learned Sanskrit much, but I can understand, and I go with that. That's my ability, not more than that. But try to, even Manasolla's I had translated to Kannada, and that much of, taking somebody's help, I can do that. So, I have been introduced as HOD. I was the Dean for Humanities and Social Sciences, Jain University, and retired. Before that, I was in Manipal University. My colleague and friend, Dr. Nita Inamdar from Manipal University is here. And we all worked in Professor Varkhedi, with him associated, when he was in Bangalore as, in charge Vice Chancellor of Sanskrit University. At that time, the Manasolla's was translated. So we all worked with him. So it's like a, the bandhavya we have developed, and I felt that, I should be part of this mega, event, beautifully arranged. And since yesterday, I am observing all of you are involved in such a way that as though you are celebrating Yajnaseni, starting from Pratibhaji. So now I will be making a presentation on Sairandri. Who is this Sairandri? I had completed my Tagore National Fellowship, nominated by National Museum, Delhi. I'm an art historian, so for me visuals are very important to interpret. So we will be looking at anything as visual, how it will be helpful for our studies. So you can understand today is the age of visual culture. So many universities are opening departments on visual culture. So I have been part of Exeter University to open the visual culture in UK, the department. So like that, visuals are very, very important, along with text. Of course, textual tradition has its own place, and it supports the visual culture. So we have to see that interdisciplinarity between visuals and textual tradition. So keeping that concept in mind, when I got my fellowship, Tagore Fellowship, I was in Delhi and worked the collections of National Museum. What was the topic that because you have to propose a topic when you are a fellow. So I proposed a topic, imagery of female messengers, Dutikas and Sakhis in Indian art, thought, and literature. So this project was completed, I have submitted, and the publication will be done by National Museum. And an exhibition of the collections, what I worked for Dutikas, also will be, in the form of exhibition, national level exhibition. It will be held on 8th March 2024. Book release and also exhibition at National Museum. You are all welcomed to come and see the National Museum. So now let us see what is this Dutika. So if I start talking, it will take hours together because of my intense research in the field. That's why I prepared, so that I can do it fast and let my colleagues to speak more
of their concerns. Messenger. Messenger is a familiar word today in today's digital world. Who doesn't know messenger? The meaning of the word messenger is synonyms to Duta or Dutika, was equally known in Indian art, literature through the ages. Academic inquiry on the concept of female messengers, their relevance and presence in painting and sculpture portray culturally enriched values of those times. Unique literary creations like Meghaduta of Kalidasa, Duti Karma Prakasha of Pandarika Vithala, Gita Govinda of Jayadeva, Rasamanjari of Bhanudatta, Rasika Priya of Keshavadasa, Sat Sai of Bihari, Ragamala texts, all these you find as paintings in National Museum collections. They are all taken, texts have been taken and paintings have been created by the artists. So in addition, the portrayal of illustrious Sakhi are made like Bani Tanni was a great maid in Kishangarh paintings, and Sakhi Chitralekha in the episode of Usha Aniruddha, and Draupadi, disguised as Sairandri, were the cultural sources for the artists to create their works of art through which they immortalized not only the literary content but also their creators. The common factor of all these themes that adds to the aesthetic value is the portrayal of Dutikas, Sakhis, in an enchanting and impressive manner. In Indian classical literature, sculpture and painting, dance and theatrical arts, the Dutikas or Sakhis, known as the female messengers, the close associates of main characters, have a significant place. A careful examination of these characters unveils astonishing details well connected with the central theme, without which the narrative becomes unaccomplished. The genre of female messengers is also seen from the viewpoint of feminist theory. The cultural analysis signifies self-critical responses situated in varied forms. Feminist analysis deconstructs the term female messengers. To speak from this context, women belong to this category where economically and culturally belong to the underprivileged group, and they fell in the bracket of lesser social status of cultural traditions because of their loyalty towards their master or mistress and respecting the notion of integrity towards purpose. They risked their lives while accomplishing their mission, and Sairandri was a great example for that. The illustrious Dutika Sakhi from Mahabharata, that is Draupadi, as Sairandri, the maidservant or female attendant in service of women apartment, who was in the service of Queen of Drupad during their 13th year of exile, that is incognito. She is a striking example that how a Sakhi in service of royal household was abused by Kichaka. Sairandri becomes helpless, curses her own beauty and state of her affairs, though she had 5 great husbands with her, but she could not say that they were husbands, her husbands. So she was pretending that her husbands are coming on particular day, they are the Gandharvas. This is what, she had given an idea to Sudeshna, that is the queen. So she had to follow the order of the queen to serve Kichaka, the lustful demon in that sabha. This shows the marginalized status of a Sakhi. At every step, she would face such challenges. At times, fall prey to circumstances
and to combat violent situations also. Such instances in the past or present reflect the vulnerable situations the Sakhis, maids, or mediators placed in the disadvantageous position. Economic reasons or otherwise drive the women to get involved in such tasks. A series of Mahabharata paintings in the collection of National Museum and other places portray Draupadi in exile as Sairandri. Mahabharata Tatparya Nirnaya by Madhvacharya, Sri Madhvacharya, in the 23rd Adhyaya, a detailed discussion on how Kichaka, takes advantageous position and how Bhima vanquished him. The entire discussion is there with very, very good instances. So that happens in the premises of Nartana Shala, where Brihannale, Arjuna, was there. He was not able to come out directly, but he supported the plot. It was a plot hatched by three. Dharmaraya didn't know about it at all. So it was Bhim, Arjuna, and Draupadi as Sairandri. So when Kichaka was killed, people and even members of royal house were cursing Sairandri and taken her forcibly to the funeral pyre of Kichaka. They thought that, she is a disgraceful woman. Because of her, all these things are happening. So Bhima welded the 105 brothers, Kichakas. There were 106 Kichakas. This one was the first one. And then 105 followed the same state. Sairandri, back to the town from graveyard, was brought by Bhima. The entire episode, since yesterday we are listening and experiencing ourselves. She fought for her rights. When her enslaved husbands lost her in the game of dice, stood against male perpetrated injustices that happened to her. What stirs anyone's conscience that such a powerful woman had to encounter intense tragic state of events all her life? Draupadi quietly endured the references to her multiple husbands, at times facing disgraced and even termed as a prostitute. She had all this, such encountering at every state, such abuses she has been passing through. We always hear, since yesterday we are all listening to this Ahalya, Draupadi, Sita, Tara, Mandodari, Panchakanya Smare Nityam Maha Pataka or whatever it is. So they are given such status, no doubt, but each one had a saga of threatened existence and checkered life, each one of them. Look at each one of them. They experienced at every stage in their life. But one thing I was noticing, that they are all not the worshipping deities. Sita also, as a consort of Rama, is worshipped. Otherwise, Ahalya is not worshipped, Draupadi is not worshipped. Only later in South India we have the Draupadi Amman temple, much later. So if you take the time and other things, they were just the women who stood for their right, not as goddesses or anything like Mahishasura Mardini, equating them to Mahishasura Mardini. It makes no sense. She was born for some other reason, and they are here as human beings, taking various roles in their lives, and stood as an example to fight for their right.
So, two questions came into my mind for all of you to ponder. So this is, even our panelists can throw their opinions on these two questions. One is, even Vyasa, the creator of the character of Draupadi, is inconsistent, portraying the power envisaged by Draupadi. At times he makes her like, very ordinary person. Very ordinary. We may say down to earth, but not necessarily that, one can become that way, as guiding force in all situations of Mahabharata. Secondly, I always question myself whether Draupadi was far ahead of her times, or the time itself allowed her to be ahead. The time itself allowed her to be ahead, and she was immortalized with her values. Thank you. Now I will be showing you quickly how she is portrayed in paintings, and I don't want to talk more about it, only I just highlight within 5 minutes it will be done. Yes, can you switch off the lights, please? Then it will be good. Lights? All lights. Yes. So this is our poster, beautiful poster created by Central University. Very nice poster. It remains forever as a poster for this Yajnaseni. And Sairandri, I have given the title as the most abused female messenger, Dutika or Saki, in Indian epics. We don't find anyone as much abused like Draupadi. Next, please. Now, this is Yajnaseni. In painting, you find that she is emerging from the fire, Yajna fire, and she is also a queen, a great queen of Dharmaraya and all the 4 other Pandavas. Next, please. Now, in National Museum collection, there is a series of illustrations on Mahabharata. This may be, it will go to about 25 to 30 paintings, giving different sequences. One of the sequence, you see that Duryodhana and Yudhishthira, they are playing the dice. And when they lost, Duryodhana is having his advisors, giving him an idea, send them to Vanavas. So they come to, in the next part, you will see that they come to Vanavas, and she is like sitting in front of all 4 of them like a shield, because there was an argument by Yudhishthira. So Draupadi didn't like that. She stood strong, with the 4 of them. Next, please. So this is Draupadi in Ravi Varma's print lithograph, how she was abused by Duryodhana and Dushasana. So it's one of the important lithograph which sold like anything in India at that time. Next, please. There's another sequence where Draupadi commands situation. It's not the Pandavas. Even the first one, he is showing the hand like this, I want to speak. He's taking the permission of Draupadi. Look at how she commanded the entire situation and Vanvas. It was under her, everything was happening. Next. Now, I think most of you heard the name Raja Ravi Varma. Raja Ravi Varma was a great painter from Kerala, belongs to royal family, and even the films and all in those days in India followed Ravi Varma's paintings and heroines of Ravi Varma.
So here, the princess, this Sairandri, was, cajoled by a Simhika. She is actually demoness. Her husband was killed by Arjuna. So she wanted to take revenge by killing Draupadi. So she tries to take her into the forest, and then Sahadeva, rescues Draupadi and takes her back. So that is the sequence you find beautifully created by Raja Ravi Verma. For him, Draupadi was the heroine. Next, please. So this is Queen Sudeshna and Dutika, Sairandri. Sairandri was, hairdresser, doing all odd jobs, menial things, as a service, as a duty. So Sudeshna takes the advantage of her and asks her to go to Kichaka. You see how the way, Draupadi is shrink, should I go? Please allow me to, don't send me. She is pleading, but Sudeshna has deaf ear. Next, please. Now here, this is a print again. That was a painting and this is a print. There is a difference between the two. So here you see that Sudeshna is ordering Draupadi, ordering Sairandri. I am the queen and you have to listen. And she is also giving the wine pot and ask her to take it to Kichaka. Next, please. And this is one of the beautiful paintings which is in Mysore. The previous one also is in Mysore, Jagan Mohana Palace. If you happen to go to Mysore, please go to Jagan Mohana Palace and look at Draupadi there. And this is the beautiful, unwilling, helpless, dejected on her own beauty, Dutika Sairandri follow the orders of the queen. She goes there. Next. So here, he welcomes her. She is terrified the way he was advancing. And that is the situation portrayed by Raja Ravi Verma. Next, please. This is a very pathetic. Again, she has been drawn to sabhas, like earlier, Vastraharan, and now Kichaka, kicks her with his foot in the sabha. She is lying there and she is humiliated, pushed down by Kichaka in the Virata court. Next. And now, transformation of Draupadi as the goddess. As I said, in South India, we have the tradition of Karaga, particularly in Karnataka. Always there is a connection between Dharmaraya and Draupadi whenever she is worshipped. So there is a temple known as Dharmaraya temple. It's the way, you see the Karaga happens. The priest dresses, man dresses like a woman and having that whole thing, that is known as Karaga. This was the old time temple and now this is a new temple, what you see there. Next, please. So these are some of the rituals. It takes 11 days to have this particular last day with the priest coming out. Till then, he has to follow certain things. So he started becoming Draupadi himself. So these are some of the rituals that takes place. Next, please. So this is one of the priests who is going to be Draupadi and getting into that mood and following certain rituals in Dharmaraya temple, Bangalore. Next. That is the priest who is going to be Draupadi. And that is the way, how Draupadi is created in one of the sanctum, dressed so beautifully as a goddess. Next. And this is Karaga rituals, Dharmaraya temple goes on. One interesting thing is that
near the temple there is a mosque. So the rituals, one of the rituals is they have to visit that mosque and they will have some kind of, samvad there. So that has been documented also. See how we have, different ways today to look at, but in those days, 16th century, even they were treated, the Islamic, temple premises were treated as one of the places they have to, Karaga has to go to all places, and there also it has to go. And the, what happened? Any problem? Another 3-4 are there. It's okay? Power? Okay. It will come or will stop? आएगा? डालो बढ़िया जल्दी. I think I may have to stop. हाँ, आगे. Yeah, it's coming. ऑन करना है. क्या हो गया? No? Even in Tamil Nadu, we have many other kinds of, rituals they follow. In Bangalore and all, there are two communities. One is known as Tigalas, who are the gardeners mainly. The community of gardeners who used to be, palace gardeners or temple gardeners. So their community follow Draupadi as their goddess. The other one, another community is like when Draupadi in Kurukshetra war, she also, develops one huge army known as Veerakumaras. So she develops to protect the people who are in danger in the battlefield, maybe women, because she was one of the one who stayed in the Kurukshetra war herself. So at that time, she had created the people as Veerakumaras. So these Veerakumaras, when she goes away finally, they say that where we should go, who will protect us? Then she says that I will come every year and be with you and you celebrate the day. That is how the Karaga takes place. Two communities in very, integrated for the purpose. They have no differences. They have the Karaga. It's a mega festival in Bangalore. They call it as Bangalore Karaga. Such a great ritual happens. This is one of the rituals known as the walking on the Atreya Gotra clans. So some of them are like, classical level, some are folk level, some are local level. All of them, they walk on the fire on that particular
festival. Next, please. So this is how you find that in Pondicherry there is a Draupadi temple where the 5 Pandavas are in stone and Draupadi is in the center. And it follows Vaishnava tradition. So they don't have that fire walking and all that. Almost like classical way, how the ritual takes place. They follow, the Vaishnavas will worship. This is the only temple which is dedicated in a very clear sense as Draupadi temple. Next, please. So this is how, Draupadi with Krishna and Arjuna, who, because of Arjuna only she enters into Pandava clan. So these two, Krishna and Arjuna, are always with Draupadi in a temple. And this is how she is dressed and beautifully, ornamented and taken into huge procession. So these are all Vaishnava tradition. Next. This is one, I was surprised to see it was not there earlier. In Bangalore, I was just driving. I saw that this kind of statue they have made in one of the circle. It's a new thing that we find in Bangalore. So it is Vahnikula, Atreya Gotra clans who follow this Veerakumaras. They have created this particular statue. Next. So thank you. Sorry for the, always, you will not know how the technical things, हाथ दे देंगे, कहाँ भी जाओ. Sorry for that. And I think I have left with you those 2 questions raising. Hope, should I repeat that question so that, we pick up and continue our discussion here? One is Vyasa himself. The second is whether the time, about the time. So thank you for this opportunity. Thank you, the Central University, then Sangeet Academy, this Sangeet Nritya Academy. Thank you very much. थैंक यू सो मच मैम. सच में बहुत सुंदर वक्तव्य था, बहुत सुंदर. शायद सरेंद्री के विषय में बहुत लोग ज़्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन उनके इस चरित्र को आपने हम सभी के सामने उजागर करा. मैम बहुत बहुत धन्यवाद. इसी क्रम में मैं प्रोफेसर सुधा रानी पांडे मैम को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो अपने विचार हम सभी के सामने साझा करें. प्रोफेसर सुधा रानी पांडे मैम, आइए. धन्यवाद. वागेवार्थम पश्यति वाग्ब्रवीति, वागेयार्थम नेत्रम संतनोति, वाच्येव विश्वम बहुरूपम निबद्धम तदेतदेकम प्रवज्य मुक्ते. नमस्कार. केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय और संगीत नाटक अकादमी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस महाकुंभ में, मैं इसे महाकुंभ इसलिए कहूँगी कि अखिल भारतवर्ष, सारी भारतीय भाषाएं जो एकता का संदेश देती हैं और विशेष रूप से महिला शक्ति यहाँ एकत्रित है. हमारी NEP में ये बात आई कि हिंदी, संस्कृत और भारतीय भाषाओं का जो अंतर संबंध है उस पर भी अब रिसर्चर्स, एकेडमिशियंस और हमारे छात्र ध्यान दें. थैंक्स टू मिनिस्ट्री कि NEP में इस बारी बात को किया गया. इस महत्वपूर्ण सत्र की अध्यक्ष और बहुत महत्वपूर्ण विषय पर उन्होंने अपना मैसेज दिया डॉक्टर चूड़ामणि नंदगोपाल, भोपाल परिसर से डॉक्टर अर्चना और वेदव्यास परिसर से प्रतिज्ञा आर्य. बहुत सारी बातें कल से हम आज तक कर रहे हैं और स्त्री शक्ति के विषय में, स्त्री विषय के पारंपरिक दृष्टिकोण, ट्रेडिशन चल रही है और वर्तमान में स्त्री की आइडेंटिटी क्या पृष्ठभूमि है, इस समय हम लोग
फिर पुनर्विचार कर रहे हैं। और यज्ञसेनी पर प्रतिभा राय जी ने जो उसे प्रतिष्ठित किया है कि वह मानवीय है, मानवीय दृष्टि, क्योंकि स्त्री हो या पुरुष, मनुष्य सबसे पहले है। तो उस मानवीय रूप को जो प्रस्तुत किया प्रतिभा राय जी ने, वह विचारणीय था और निरंतर हम लोग उस बात को कर रहे हैं, अब भी करते रहते हैं, पूरे देश भर में करते हैं। और परंतु उसे अनुभव करके प्रयोग करने की बात है। अतीत की पृष्ठभूमि में जो स्त्री के संवादी स्वर हुए हैं, उसमें नारी की संवेदना के बहुत बड़ी पड़ताल जो वैदिक काल से है, इतिहास, कल्चर, रिलीजियस, सांस्कृतिक जीवन, और जहाँ अभी मैडम ने दिखाया प्रकाश भी है, अंधकार भी है, दोनों ही धूप छाई चित्र हैं। अभी मैडम ने सारे सरंध्री से दिखाया, सरंध्री नहीं, पंच महाकन्याओं का प्रस्तुतिकरण किया। और सचमुच में वो इस धरती की स्त्री रही हैं। और आप आश्चर्य देखिए कि उन्हें सोसाइटी में ऐसा डील किया गया कि जैसे वो उन्होंने कोई अपराध किया, उन्होंने कोई पाप किया। अहिल्या को पाप के रूप में दंड मिला, परंतु वो पापी नहीं है, महापवित्र हैं। तभी तो पंचस्मरणीय कन्याओं में माना गया, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यह है कि वे लौकिक जन्माना नहीं है, अयोनिजा हैं, किसी पुरुष स्त्री के संसार से उत्पन्न नहीं है। यज्ञसेनी का सुना आपने। अभी मैंने एक किसी किताब का रिव्यू लिखा, मयतनिया पर किसी ने नहीं लिखा है। अभी किसी लेडी ने मयतनिया पर खंडकाव्य लिखा, मुझसे रिव्यू लिखवाया। मंदोदरी पर किसी ने, बहुत कम मिलता है, कोई महाकाव्य नहीं लिखा गया। तो ये परंपरा हमारी वेदोपनिषद काल से चल रही है। कल मैंने प्रयोग किया था, वेद में आया, अथर्ववेद में, प्रतिष्ठ विराडसी विष्णुरेव सरस्वती सिनी वाली प्रजावताम भयस्य सुमतावत। अर्थात नारी तुम यहाँ प्रतिष्ठित हो, तुम तेजस्वी हैं, हे सौभाग्यवती नारी, तुम संतान को जन्म देना और सौभाग्य देवता की कृपा दृष्टि में रहना। पितृसत्तात्मक समाज की ये परंपरा वर्षों से रही। ब्रह्मवादिनी गार्गी, अपाला, घोषा, विश्वारा, लोपामुद्रा जो मंत्रों की रचनाएं भी करती हैं और शास्त्रार्थ भी करती थी। हम राष्ट्रीय संगमनी वसु नाम वागम्बरिणी ऋषिका का कल भी मैंने कोट किया था कि वो कहती है कि जब मैं सृजन करती हूँ तो सारा मेरे गति में शामिल हो जाता है और मुझे न मानने वाले क्षीणता को प्राप्त होते हैं। मैं देवताओं और मनुष्यों के परम पुरुषार्थ की उपदेष्टा हूँ। मेरी ही कृपा से लोग बलवान, मेधावी, स्तोता कवि बनते हैं। और वो कहती है जब मैं सृजन कर्म करती हूँ तो मेरी गति वायु के समान होती है। मैं अपने महत्वपूर्ण कार्यों में भी महिमामयी बनकर आकाश और पृथ्वी की सीमाओं को लांघती हूँ। तो ऋग्वेद में जो बात प्रस्तुत की गई वागम्बरिणी ऋषिका रही है और उसका उसी में एक बहुत बड़ी बात कहती है, हम रुद्राय धनुरातनु में, मैं रुद्र के लिए धनुष भी खींचती हूँ। उसका वीर रूप भी है, सृजन कर्मा रूप भी है, यद्यपि वह एक अमूर्त रूप है। वागम्बरिणी ऋषिका है पर अमूर्त रूप का कल्पना कर रही है, परंतु मैसेज दे रही है कि पुरुषार्थ करने वाले पुरुष, मेरे अधीन रहने वाले मेरे द्वारा आगे बढ़ते। ये वैदिक ऋषिकाओं का रूप था। इसी प्रकार हम गार्गी को कौन नहीं जानता, ब्रह्मवादी गार्गी याज्ञवल्क्य से पूछती जा रही, याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं कि गार्गी माप कि तुम इतना मत पूछो कहीं तुम्हारा मस्तक ना फट जाए। गार्गी याज्ञवल्क्य को पराजित नहीं करना चाहती थी, केवल उसका उद्देश्य था कि उस सभा में खड़े होकर अपने वर्चस्व को, अपने ज्ञान के वर्चस्व को करे। और उसी का सुपरिणाम रहा कि बृहदारण्यक उपनिषद, इतना बड़ा उपनिषद एक गार्गी याज्ञवल्क्य की एक ब्रह्म ज्ञान की परंपरा का रूप प्रस्तुत करके आया। उपनिषदकारों में नर और नारी में एक ही तत्व का अस्तित्व और एक ही चेतना की छाया देखी थी, वहाँ पार्थक्य नहीं था। और अर्धनारीश्वर की परिकल्पना कल मैंने रेफरेंस दिया था, क्योंकि परस्पर विरोधी तत्वों की एकता को, कभी शिव और शक्ति का संयोज्य रूप जो है वो क्या है, प्रकृति और पुरुष की सृष्टि का संदर्भ है। वहाँ
अर्धनारीश्वर की परिकल्पना में पुरुष स्त्री पृथक नहीं है। राधा कृष्ण की बात कही जाती, राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। चित्त की लीला है, रास करते हैं, ये नहीं पता कि राधा कौन है, कृष्ण कौन है। इसी प्रकार स्मृति पुराण काल तक आते आते अब रूप बदलता है कि मनुस्मृति में आते आते हम स्त्री के लिए बंधन बहुत अधिक बांधे जाते हैं। देवी मनु खुद भी कहते हैं नरस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, परंतु स्त्री के लिए श्रृंखलाएं बढ़ने लगी थी स्मृति काल तक आते आते। इतना ही नहीं, अष्टावक्र गीता में कौल का पुत्र अष्टावक्र कहता है, पिता रक्षित को कमाने वाला है, श्लोक बहुत प्रसिद्ध है। न स्त्री स्वतंत्र महरती, स्त्री को स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए। बाल्यावस्था में पिता रक्षा करेगा, युवावस्था में पति रक्षा करेगा और वृद्धावस्था में पुत्र रक्षा करे, तो इसलिए स्त्री के लिए स्वतंत्रता की आवश्यकता नहीं है। तो ये बहुत सारी कंट्राडिक्टरी बातें उन हमारे पुराण वेदोपनिषदों में कही, जैसे कि मैडम ने व्यास का कहा, क्योंकि सारा का सारा महाभारत जो है इल्यूजन का टाइम है। पहले कहानी से लेकर चाहे सत्यवती उनकी शुरुआत करें हम सत्यवती का, और उससे जो चालू होता है भीष्म तक आते हैं, धृतराष्ट्र तक आते हैं। धृतराष्ट्र पांडु का जन्म किस प्रकार से हुआ सारी दुनिया को पता।